हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो कि जिसके सामान अभी आप देख रहे हैं। ये केस है कूलर मास्टर H500M। और बाकी का जो सामान है इसमें है कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ। प्रोसेसर है Ryzen 9 3900, मदरबोर्ड Gigabyte X570 Auros मास्टर, और रैम है आपका GSkill Trident Neo Z 32GB 3600 मेगाहर्ट्ज़ किट। ग्राफिक्स कार्ड MSI 2080 Ti लाइटनिंग गेमिंग एक्स ट्रियो। और बाकी है एक 4 टेराबाइट का हार्ड ड्राइव, एक 1 टेराबाइट का Gen 4 Gigabyte Auros का SSD, Antec 1000 वाट्स का पावर सप्लाई और Thermaltake वाटर कूलर। तो चलिए हम लोग पहले अनबॉक्स करते हैं इसको। और सबसे पहले हम यहाँ से सामान निकालेंगे। तो ये रहा पावर सप्लाई, ये हार्ड ड्राइव, ये है कूलर, ये रहा मदरबोर्ड, ये है Gen 4 SSD, ये है 32GB रैम किट, ये प्रोसेसर Ryzen 9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये रहा अपना ग्राफिक्स कार्ड। अभी हम इसको भी अनबॉक्स करेंगे और ये करना काफी टफ है क्योंकि दिस इज वेरी हेवी। सच बोले ये कैबिनेट चूज करने में बहुत टाइम लगा। आई वाज नॉट रियली गेटिंग व्हाट आई वांटेड। थर्मलटेक लेवल 21 चाहिए था लेकिन वो मिल नहीं रहा था क्योंकि अभी कोरोना वायरस के चक्कर में आधे प्रोडक्ट्स मिल नहीं रहे हैं। तो उसको निकालने के लिए दोस्तों काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। उल्टा खोल रहे हैं हम लोग। ये है इसका एक फ्रंट पैनल, ये रिमूवेबल है। या तो आप इसको यूज कर सकते हैं या फिर जो मेश है मेश यूज कर सकते हैं। ये एक्सेसरीज बॉक्स है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पैकिंग इज टॉप नॉच। आपको ये ऐसे कैरी बैग भी मिलता है इन केस यू वांट टू कैरी इट। चलिए हम इसको खोलते हैं। खोलने में क्या दिक्कत आ रही है?
दिखता है, को चारों तरफ टेम्पर्ड ग्लास मिलेगा, इधर इधर इधर, और सामने का ये पैनल आप स्पेयर टेम्पर्ड ग्लास से रिप्लेस कर सकते हैं। So hello friends, we are now going to switch on the system. Unfortunately, I was not able to complete the complete build on
video because the RAM turned out to be faulty and there were some issues with the graphics card as well. So the next day I had to go ahead and again submit them for RMA. I received the parts today and here we go. This is how the complete build looks from an angle. If you see the graphics card, the RAM, the top of the CPU cooler, everything is glowing with LEDs. So this is how the complete thing looks. And once the system is on, the RGBs will come in sync. If you see, the top fans will change in some time. So that's all, friends. If you have any questions regarding the build or the configuration or the performance of the system, do let me know. I'll be more than happy to answer your questions. If you like the video, do subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get notified for future video updates. Thank you everyone for watching. Bye.